भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जय हो जय बाला की। आपने एग्जैक्टली यही बोला था, अभी बहुत गिरावट बाकी है, अभी बाजार में ज़्यादा एडवेंचरस मत होइए, अच्छे लेवल्स मिलेंगे, अभी इससे भी अच्छे लेवल्स मिलेंगे क्या? आज तो 16,000 इंटरडे एक बार ब्रेक हुआ, शार्प रिकवरी। बताइए जय, यहाँ से भी नीचे की डाउनसाइड अभी है या अब स्टार्ट कर देना चाहिए लेना? Thank you for having me on the show. अभी शॉर्ट टर्म में दो सिनेरियो पॉसिबल है। अगर एक मार्च लो नहीं तोड़ेगा तो क्या होता है ना, इट कैन गो साइडवेज फ्रॉम हियर. But don't get lost in a short term. The medium term still got downsides. So if it doesn't, the Nifty doesn't break the March lows, we could see a little bit of bounce back, somewhere close to 16,500, or maybe even a little more higher, 16,800, maybe even 17,000. But there are two possibilities. Basically, a bounce that goes, and this is basically coming from the banking index. So banking index slightly has a different pattern to the Nifty. The medium term, I know, has got much more downsides. It has to go to this bull market correction has to drop somewhere close to 14,000. So that's the key. So if अगर short term में थोड़ा bounce आ रहा है तो investors should not get confused. It's just a short term bounce, just a short term relief rally, because the markets are getting slightly stretched to the short term. So basically keep the focus on the medium term. But if you're a trader, you can utilize the bounce that comes in the short term. बिल्कुल, हम लोग तो शॉर्ट टर्म डेली मूवमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं जय, और आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड हो गए थे तो थोड़ा एक बाउंस जो 16,800 इवन 17,000 तक ले जा सकता है, उसके लिए आपको प्ले करना चाहिए। लेकिन मीडियम टर्म स्ट्रक्चर अभी भी डाउनवर्ड्स है और शायद वो 14,000 के आसपास, इट कुड बी 14,500, 13,500, फिर 15,000 वहाँ तक। अभी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, क्योंकि वाकई में ये बात सच है कि बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। 2-3 दिनों से देख रहे हैं निफ्टी साइडवेज रहता है या नेगेटिव रहता है, बैंक निफ्टी सबसे पहले रिबाउंड करता है, एज इफ लीड कर रहा हो बाजार को। तो बैंक निफ्टी या बैंक निफ्टी के पार्टिसिपेंट्स में आप किस पे बेट करेंगे लॉन्ग साइड? Oh, correct. Bank Nifty, just like I said just before, उसका पैटर्न थोड़ा अलग है। उसका पॉसिबिलिटी उधर है, वो 37,000 तक जाने के लिए मौका है। अगर वो लास्ट वीक का लो तोड़ेगा तो it might still go back to touch the March lows, but it seems to have a slightly different pattern. But once again, keep the focus on the short term and the medium term separated. अगर वो 37,000 तक बाउंस हो जाए तो वो सिर्फ ट्रेडिंग रैली है। उसके बाद बैंक निफ्टी के साथ सिंक्रोनाइज मूवमेंट हो जाएगा। So watch out for it. So nothing beyond 37,300 and 37,500. Once that happens, the Nifty and the Bank Nifty will go and sync. So in fact, the next leg of the acceleration might come from the Bank Nifty. So nazar rakhiye. Watch out for this. So basically, separate the short term from the medium term. Mr. Bala, hi, good afternoon. Mansi this side. There's a lot happening on energy front. ऑयल, नेचुरल गैस की अगर बात करें, यहाँ पर हमने देखा करीब $106 ब्रेंट क्रूड ट्रेड होता हुआ दिख रहा है आफ्टर अ 2 सेशन डाउन ट्रेंड ऑफ अराउंड 9%। ऑयल में आज हमने अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स देखे हैं। कमोडिटीज प्ले में पर्टिकुलरली एनर्जी पैक को आप कैसे देख रहे हैं? Yeah, it's getting very volatile there, but it's अगर आप commodities में trader है तो बहुत ज़्यादा volatility है। Watch 114.85 on the Brent futures. If that were to get taken out, बहुत बड़ा upside है। I think it will go to record high past 144. Basically, 114.85 is the bull bear divide for the Brent. When it comes to the dollar, I think उधर unfinished up move है, 106 तक जाना है। So that's where the market will complete its short term structure, and
that's the important levels to watch. Natural gas obviously has been going at 10% on each side, so it's completely untradable. So if you're going to trade that, you have that kind of risk appetite, options में trade करना है. मिस्टर बाला, एक और चीज़ जानना समझना चाहेंगे, US 10 ईयर बॉन्ड की आप देखें 3.2 से शार्पली करेक्ट होकर 2.93% तक आए. इसका क्या मतलब है? क्योंकि आज CPI डेटा आना है US का, इसका क्या मतलब है कि फिर से अभी भी आपको इन्फ्लेशन पीक पे रह सकता है? क्या रीडिंग होनी चाहिए इस पर? हाँ, हमारा लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म टारगेट 3.25 था. सो उधर तक आ चुका है मार्केट. 3.2 टच किया. इधर से थोड़ा कूलिंग होना चाहिए. So that's what the technical structure points out. The market needs to cool from this point. So but the long term, we are in a rising yields environment. 40 साल का ट्रेंड लाइन थोड़ा है US Treasuries का ट्रेंड लाइन. So वो 40 साल का ट्रेंड लाइन के ऊपर है. वो ट्रेंड लाइन 2.8 2.7 that it's around that level. So basically it's signaling a very important message, and it's close above that 40-year trend line in the month of April. So although from a medium term, I'm expecting, medium to long term, I'm expecting about 500 bips plus for the US 10-year yields, but in the extreme short term, there is a cooling possibility somewhere close to 230 bips. राइट, तो यहाँ कूल ऑफ हो सकता है. 2.30% भी हो सकता है US 10 ईयर बॉन्ड का. शुक्रिया जय बाला, आप अपना समय दिया और हमें साथ ही इन सारे मैटर्स पर अपना डिस्कशन व्यूज शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको. तो एक बाउंस बैक एंटिसिपेट करना चाहिए यहाँ पर, और एज हाई एज टू 17,000 तक के लेवल्स, लेकिन देखना होगा, वॉच आउट करना होगा. कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स जो आज US से आने हैं, साथ ही आज जिस तरह से क्रूशियल लेवल्स के पास बाजार ट्रेड कर रहा है, देखना होगा कि किस तरह से बाउंस बैक यहाँ आ पाता है.